Hello, dear student. Welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 11, in which we will discuss or study about the molecular spectroscopy. In our unit number 3rd, atomic and molecular spectroscopy, we discussed earlier in this chapter there are two parts. The part 1 is atomic physics and part 2 is a molecular spectroscopy. So up to the 10th lecture, we already studied about the atomic spectroscopy or atomic study or atomic physics. Now in the part B, we will study on the molecular spectra. In that molecular spectroscopy, there are two parts, Raman spectra and X-rays. Okay. So now first we see the introduction of molecular spectroscopy and then we'll study about the X-rays and then Raman effect. So in that way we'll finish our the chapter number 3rd, atomic and molecular spectroscopy. So now we'll see the molecular spectroscopy. So the spectroscopy is that the branch of science which deals with the study of interaction of electromagnetic radiations with matter. So everybody know the electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum consists of a different types of frequencies, including the gamma rays. Here we see the from higher frequency to lower frequency or higher energy to lower energy. The higher energy radiation is the gamma rays, then X-rays, then ultraviolet, then visible, then infrared, microwaves, radio wave, TV waves, and the long radio waves. So these are the electromagnetic spectrum, and or we see as a electromagnetic radiation with a different frequency. According to the frequency, the name is given here. Okay, so now this electromagnetic radiation is interact with the matter, and everybody know the what matter means. What the matter is created from the compound. Compound is created from the molecules, and the molecule is created from the atoms. So the smallest part of the matter is nothing but the atom. So indirectly here we say as the radiation interact with the matter is means that radiation interact with the atom. This radiation interact with the atom, then we'll get a spectra. Or here we say the molecular spectrum means what? The number two or more atoms combine to form a molecules. So this radiation interact with these molecules, nothing but indirectly with atom. Then we'll get a spectra. This spectra is called as molecular spectra. So basically, now the molecular spectra has a different types. So it's including pure rotational spectra, or here says a microwave spectra, vibrational rotational spectra, electronic band spectra, Raman spectra, nuclear magnetic resonance as NMR, and electron spin resonance ESR spectra. But basically this molecular spectra has three types: electronics, vibrational, and rotational. So the diagram shows the excitation of molecules to different energy level varies with the wavelength of the radiation absorbed. Okay, so in your left hand side, the diagram shows there's two or three atoms combined to form molecules, and the radiation absorbs these molecules, and we get a different type of spectra like electronic, vibration, and rotation. So the energy level is very compact and small in case of vibrational, and this is in between the rotational, and this energy level in between the vibrational energy state, and this vibrational rotational energy in between the electronic state. Now after some time we once again we discuss on this previous diagram. So So according to the Braun-Oppenheimer approximation, the total energy of the molecules is the sum of the translational, rotational, vibrational, and electronic energies. That is, total equals to E translation plus E rotational plus E vibrational plus E electronics.
It is found that the translation energy is negligibly small. Hence, Braun-Oppenheimer approximation can be written as E total equals to E rotational plus E vibrational plus E translation. Okay. So the rotational energy state are separated by the quite small energy interval about 10 to the power minus 3 electron volt. The spectra arises from the transition between this state are in the microwave region of electromagnetic spectrum with wavelength of 0.1 millimeter to 1 centimeter. So this diagram shows the rotational spectrum of these molecules. Rotational this is a rigid rotator which is rotating about its center of axis, center of mass. Then the vibrational energy state are separated by energy intervals about 10 electron volt. The spectra arises from transition between this state are in the infrared region of electromagnetic spectrum with wavelength of 1 micrometer to 0.1 millimeter. This diagram shows this vibrational energy, vibrational molecules. H is one of the atom, hydrogen, and Cl is another atom. So form this two atom is attached with the hypothetical spring, and this is vibrate in the stretching mode. Now in molecular electronic state are separated by energy interval about several electron volts. The spectra arises from transition between this state are in the ultraviolet and visible region of electromagnetic spectrum. So it is clear that the atomic spectra involve transition of atom from one electronic state to the another, but the molecular spectra involve the transition of molecules between the rotational, vibrational state in addition to the transitions between electronic states. Hence, molecular spectra involve series of closely spaced lines corresponding to rotational, vibrational, electronic transition called as band spectra. Okay. So these are the application of the molecular spectroscopy. The molecular spectra are useful in determining the detailed picture of particular molecules, including bond length, force constant, and bond angle. So the molecular spectra are generally observed as absorption spectrum. तो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा का मतलब हुआ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन दिखाई देते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एक HCl मॉलिक्यूल्स है ओके HCl एक मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या होगा कि ये इसको जब रेडिएशन प्रोवाइड किया जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स इनडायरेक्टली एटम जो है ये क्या करेंगे कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर में देखा गया है कि ये साथ ही साथ क्या होते हैं ये इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व भी होते हैं साथ ही साथ ये उसके अलॉन्ग मेन एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट भी होते हैं और रोटेशनल और वाइब्रेशन की वजह से एक अंदर ही एनर्जी लेवल क्रिएट होती है ठीक है और जनरली हमने देखा था कि जैसे एटम के अंदर में क्या होता है कि एटम के अंदर में रेडिएशन एटम एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है और रेडिएशन को इमिट करता है ठीक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में एक एनर्जी लेवल आके बैठ रही है वो इसलिए बैठ रही है कि वो एटम के रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से इसीलिए यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई गई है कि रोटेशनल और वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में एनर्जी लेवल आते हैं जैसे भी ग्रीन लाइन शो कर रहा है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो कि ब्लू लाइन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में है और ये जो ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन जो रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की है वो रेड लाइन के अंदर में आती है ठीक है तो सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ रेड लाइन के अंदर के आने वाले स्पेक्ट्रम की हमने स्टडी किया था जैसे E0 E1 E2 लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि 2 और 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाने के बाद 2 और 3 आइटम मिल जाने के वजह से मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहा है और मॉलिक्यूल्स को अगर रेडिएशन उसके ऊपर में इंसिडेंट करते हैं तो
साथ ही साथ वो रोटेट भी होता है, वाइब्रेट भी होता है। तो रोटेशन और वाइब्रेशन की वजह से बीच में एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाती है और फिर हमको उसका स्पेक्ट्रा की स्टडी अलग से करना पड़ता है। तो इस तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बाद के लेक्चर में हम एक्सरे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फिर रमन स्पेक्ट्रा, इतने आपके सिलेबस में है।